chapter number 15, which is kinetics of a particle, impulse and momentum method. Last week, we covered the principle of impulse and momentum. That principle of impulse and momentum states that the initial momentum of a particle plus sum of all the impulses that are acting on the particle during time interval t1 to t2 should be equal to the final momentum of the particle. Now, this principle of impulse and momentum basically gives you a relationship between forces, velocity, and time. Once discussing the theory of this topic and solving various examples and problems relevant to that topic, we moved on to the next topic, which was conservation of linear momentum for a system of particles. Now, this conservation of momentum principle is always applied once two particles interact or collide with each other. During that collision, if there is no external impulsive force that acts on that particle during that interaction or during that collision, then we can say that the system's momentum has been conserved along that particular axis. For example, अगर आप x axis के along apply कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि there is no external impulsive force acting on the system along the x axis, then you can say that the system's momentum along that x axis has been conserved. In other words, the initial momentum of the system along that axis should be equal to the final momentum of the system along that axis, provided that there is no external impulsive force acting along that axis. For example, अगर आपने x axis consider की है तो x axis के along कोई external impulsive force नहीं apply होनी चाहिए. इसी तरह अगर आपने y axis consider की है तो system का momentum y axis के along conserve होगा अगर y axis के along कोई external impulsive force जो है वो act नहीं हो रही. जब हम बात करते हैं external impulsive force की, तो आपके पास जब दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट होते हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन के दौरान जो फोर्स एक पार्टिकल दूसरे पे या दूसरा पार्टिकल पहले पे एक्सर्ट करता है, दैट फोर्स इज बेसिकली कंसिडर्ड एज इंटरनल टू द सिस्टम, बिकॉज एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट फोर्स एक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट इक्वल इन कोलिनियर पेयर्स, तो उनका जो नेट इफेक्ट होता है इंटरनल फोर्सेस का वो जीरो हो जाता है या निग्लेक्ट कर देते हैं हम अपनी इम्पल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस से. तो अगर उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो देन यू कैन से दैट द सिस्टम्स मोमेंटम हैज बीन कंजर्व्ड along that particular axis. This was the theory of conservation of momentum principle, which was discussed last time. Today, inshallah, we are going to solve some exercise problems as well as examples relevant to this topic. And inshallah, tomorrow we are going to cover the impact analysis topic in our 2-hour class. Moreover, as we have announced earlier as well, that tomorrow we are going to have quiz number 5 relevant to equation of motion in terms of cylindrical coordinates, that is r, theta, and z. Okay, moving on to the various examples and problems relevant to this topic. These are the problems जिनमें से कुछ हम आज solve कर लेंगे और बाकी जो रह जाएंगे उनको हम ऐसा non-submitted homework के तौर पे consider कर लेंगे. Okay, starting with example 15-4, we have two particles. Kindly मुझे remind करवा दें, ये हमने last time आपकी क्लास में solve किया था, क्योंकि एक क्लास में solve किया था, probably शायद वो C से solve किया था सर. हमने कर लिया था solve. Yes sir. ओके, अच्छा, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल है ये हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसमें आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितनी भी एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स देखेंगे, उन तमाम प्रॉब्लम्स में एक कंडीशन आपको लाजमी नजर आएगी, वो ये कि वंस दीस टू पार्टिकल्स इंटरैक्ट देन दे आर गोइंग टू कपल टुगेदर एंड देन द होल सिस्टम इज गोइंग टू मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. इसके मुकाबले में जो हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस वाला टॉपिक है, जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब टू पार्टिकल्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड होने के बाद दे आर गोइंग टू रीबाउंड इन वेरियस डायरेक्शंस, वो हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस वाला टॉपिक है जो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे. तो जहां तक ताल्लुक इस टॉपिक का है, इसमें आपको जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आफ्टर इंटरेक्शन दोस टू पार्टिकल्स आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड द होल सिस्टम इज गोइंग टू मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. तो इसकी वर्डिंग आप देखिएगा, तमाम प्रॉब्लम में आपको ये वर्डिंग नजर आ जाएगी कि सिस्टम कंबाइन होकर कॉमन वेलोसिटी से मूव करे. सो लास्ट टाइम अगर हमने ये सॉल्व कर लिया था, तो आज फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं. जस्ट अ क्विक रिव्यू क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें दो चीजें कही गई थी. वन वाज द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स जस्ट आफ्टर द कपलिंग, तो उसके लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर लिया था. और जब हमें कहा जाए कि यू नीड टू डिटरमिन द एवरेज फोर्स बिटवीन दोस टू पार्टिकल्स, जो कि इंटरनल फोर्स है, उसके लिए फिर हम सिस्टम को कंसिडर करने के बजाय इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं और उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई करके हम वो इंटरनल इंपल्सिव फोर्स जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. वो बेशक आप पार्टिकल ए को कंसिडर कर लें या पार्टिकल बी को कंसिडर कर लें. Okay, moving on to today's lecture, which is example 15-7 से हम start करते हैं.
Again, we have a particle which is this 800 kg rigid pile being represented by alphabet P, जो कि sand के अंदर लगी हुई है. So this is the rigid pile P जिसके हवाले से बात हो रही है. It has a mass of 800 kg and it is driven into the ground using a 300 kg hammer which is being represented by H here. So ये हैमर जो है इसकी मदद से आप ये जो रिजिड पाइल है इसको ग्राउंड में जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं. द हैमर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 0.5 meters from that pile and strikes the top of this pile. You need to determine the impulse which this hammer imparts on the pile. If the pile is surrounded entirely by loose sand, so that after striking the hammer does not rebound off the pile. अब जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, या यानी हम अगर कॉमन प्रैक्टिस देखें तो जब आप हैमर या नेल का इंटरेक्शन देखते हैं तो हैमर जब नेल से टकराती है तो हैमर इज गोइंग टू रीबाउंड बैक. यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि दैट रिजिड पाइल पी इज बीइंग सराउंडेड बाय लूज सैंड, सो वंस दिस हैमर स्ट्राइक्स द पाइल इट डज नॉट रीबाउंड, रादर द होल सिस्टम व्हिच इज द हैमर एंड द पाइल आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड मूव इनसाइड दिस सैंड विद अ कॉमन वेलोसिटी. हैमर जो है वो रीबाउंड नहीं कर रहा बल्कि पाइल के साथ स्टक होके वो दोनों चीजें सैंड के अंदर जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही हैं. सो यू नीड टू फाइंड आउट the average impulse which this hammer imparts on this pile. Okay, so how we are going to find it? Any idea? Sir, initial momentum of the system. Find करेंगे, final momentum of the system find करेंगे. Okay, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हमें वो internal impulse find करना है. Internal impulse find करने के लिए मैं आइदर हैमर या पाइल की फ्री बॉडी डायग्राम इस इंटरेक्शन के दौरान की बना लूं तो मैं वो इंटरनल इंपल्स जो है वो डिटरमिन कर सकता हूं. लेकिन उसमें वो इंटरनल इंपल्स डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि मेरे पास सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जो है वो पता हो, कितनी वेलोसिटी से सिस्टम जो है वो इंटरेक्शन के बाद ट्रेवल करेगा. सो सबसे पहले तो मैं इसका मतलब है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लूंगा सिस्टम पे बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन. ऐसे ही है? यस सर. So since there is no external impulsive force acting on the system during interaction, जो भी force है वो internal force है जो hammer pile पे या pile hammer पे exert करते हैं. So since there is no external impulsive force acting on the system along the y-axis, so the system's momentum has been conserved along the y-axis. So we can apply the conservation of momentum principle on this system. But in order to apply that conservation of momentum principle, हमें हैमर किस वेलोसिटी के साथ आके पाइल को स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी तो पता होनी चाहिए. Yes sir. So do we know that velocity or can we determine that velocity? No sir, we don't know, but we can determine from conservation of momentum. We can determine the velocity of the hammer with which it strikes the pile using which principle? Conservation of momentum. जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे या कोई और प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? फ्री फॉल भी कर सकते हैं सर. जी हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं. वी कैन आइदर यूज वो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वाली जो इक्वेशंस थी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन इवन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इक्वेशन ऑफ मोशन वुड गिव अस एक्सेलरेशन. उसको फिर हमें वेलोसिटी के साथ और एस के साथ रिलेट करना पड़ेगा. और देयर इज अनदर इजियर मेथड ऑफ फाइंडिंग दैट वेलोसिटी ऑफ हैमर विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द पाइल. सर प्रोजेक्टाइल? नो, हैमर की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है. सो v इन्वॉल्व हो गया, ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है. सो s इन्वॉल्व हो गया, हैमर का अपना वेट है. सो w इन्वॉल्व हो गया. सो फोर्सेस, वेलोसिटी और s, व्हाट शुड बी द डायरेक्ट मेथड? We can apply work energy methods on this hammer. Okay, now from in that work energy method, shall we apply the principle of work and energy or the conservation of energy principle? कोई non conservative force है यहाँ? No sir. So since there is no non-conservative force acting on the hammer from its point where it is being released from rest to the point where it strikes the pile, चूंकि कोई non-conservative force hammer पे act नहीं कर रही, so you can even apply the conservation of energy principle on the hammer. So choice आपकी अपनी है. आप conservation of energy भी hammer पे apply कर सकते हैं, आप free falling वाला भी apply कर सकते हैं, आप चाहें तो equation of मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस सपोज कि मैं हैमर के ऊपर अप्लाई करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पोजीशन 1 जहां वो रेस्ट से रिलीज हो रही है टू पोजीशन 2 जो मैं डिफाइन कर रहा हूं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पाइल. सो इस पोजीशन 1 मेरी है व्हेन द हैमर इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पोजीशन शोन. पोजीशन 2 मैं कहता हूं द पोजीशन
when it is just before striking the pile, और position 3 में कहता हूँ when it is just after striking the pile. So I am applying the conservation of energy principle on the hammer between position 1 and position 2. So that principle says that T1 plus V1 should be equal to T2 plus V2, and since no elastic spring is being involved here, it means कि आपके पास जो potential energy आएगी वो basically आपके पास gravitational potential energy आएगी. So we can write it as Vg1 and Vg2 here. Okay, so this is the conservation of energy principle being applied on the hammer between position 1 and position 2. What should be the kinetic energy of the hammer at position 1 from where it is being released from rest? 0. So since the hammer is being released from rest at position 1, so the kinetic energy T1 should be equal to 0. Moreover, the datum is being defined at position 2. So हमने datum जो है वो position 2 के ऊपर define किया है. So it means के what should be the value of Vg1? Positive, negative? जी, gravitational potential of the hammer at position 1, positive, negative? Positive. क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज पोजीशन 1 जो है वो पोजीशन जो डाटा में आपका उससे अबव लाई करती है, सो इट शुड हैव पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? mgh. So mgh 300 into 9.81 into h, which is 0.5. So this is going to be the gravitational potential of the hammer at position 1. Okay, what about the gravitational potential at the hammer at position 2? 0. 0 because position 2 is being Height defined 0. by our datum. So Vg2 हमारे पास 0 आ गया, T2 हमारे पास half mv2 square है. So once we solve it, we are going to get Vh2 to be equal to 3.13 meter per second. So the hammer is going to strike the pile with this much of velocity. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, let us suppose कि आप इसको free falling object वाली equation के साथ करना चाहते हैं, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं आप? Under root 2gh. Yeah, so v square equal to v naught square plus 2g s वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. थ्रू आउट द मोशन द हैमर इज अंडर अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आप वो इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए फाइनल वेलोसिटी हैमर की निकाल सकते थे. तो आप अगर वर्क एनर्जी से कन्वीनियंट है वो यूज कर लें, अगर आप जो है वो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन से कंसर्न है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज्यादा फेमिलियर उसके साथ हैं. अगर आप ज्यादा फेमिलियर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इस पे हम वर्क एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. Yes, sir. तो अगर आप वर्क एनर्जी क्या चाहते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है. ओके, नाउ वंस वी हैव गॉट दिस वेलोसिटी, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? सर अब पाइल का देखें. क्या पाइल का क्या देखें? अब पाइल सिस्टम की सर फाइनल वेलोसिटी. अब हम सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? Conservation of momentum. So apply, since during that interaction there is no external impulsive force acting along the y-axis on this system, so we can say that the system's momentum has been conserved along the y-axis. So applying the conservation of momentum principle along the y-axis, taking positive side downward, the conservation of momentum principle says that mh vh2, which is the initial momentum of the hammer, plus mp vp2, which is the initial momentum of the pile, it should be equal to mh plus mp v3. ठीक है? So we have applied the conservation of momentum principle on the system during that interaction. Since there is no external impulsive force acting on the system during this interaction along the y-axis, so the system's momentum has been conserved. That is, the initial momentum of the system should be equal to the final momentum of the system. As far as the initial momentum of the system is concerned, जो hammer का momentum है वो हमें already known है, which is 300 into VH2 हमने find कर लिए 3.13. What about the initial momentum of the pile before striking? 0. Since the pile was at rest, so Vp2 would be equal to 0. That will give us MP Vp2 to be equal to 0. This should be equal to 300 plus 800, so 1100 V3. So once we solve it, the value of V3 comes out to be 0.854 meters per second. So this is the velocity with which
both the hammer and pile, that is the system is going to move inside the sand या start motion inside the sand. फिर जाहिर सी बात है sand का resistance और बाकी चीजें आएंगी जो इसके motion को slow कर देंगी, लेकिन the motion is going to start with this much of velocity. Okay, but still we haven't found the impulse which the hammer exerts on the pile or vice versa. So how we are going to find that impulse? सर दोनों बॉडी में से किसी एक को कंसीडर करके मोमेंटम की इक्वेशन यूज करेंगे. Okay, so in order to find out that internal impulse, we are going to draw the free body diagram of either the hammer or the pile, and then we are going to apply the principle of impulse and momentum on that free body diagram. So let us consider the free body diagram of the hammer. This is going to be the free body diagram in which the hammer के ऊपर जो resistance आ रहा है वो pile की वजह से हमने R के तौर पे show की है. So applying the principle of impulse and momentum on this hammer, the momentum of the hammer after the momentum of the hammer before striking, which is mh vh2 plus sum of all the impulses that are acting on the hammer during this interaction should be equal to the final momentum of the hammer. Initial momentum हमें पता है 300 into this 3.13 आ जाएगा. Final momentum हमें पता है 300 into 0.854 आ जाएगा. जहां तक ताल्लुक ये impulses का है, so the only impulse which would be acting on the hammer is going to be this impulse R. So once we solve it, this R dt comes out to be 682.8 Newton second. Now this is the impulse, so its unit should be Newton second. अगर मैं आपको interaction का time से कह देता 0.5 millisecond है, so interaction का time दे देता तो you can find out the impulsive force as well. But यहाँ चूंकि impulse हमें impulse find करने का कहा गया है, तो हमने जो है वो impulse find की जो कि Newton second में unit से. अगर मैं आपको 0.5 millisecond दे देता तो आप impulsive force determine कर सकते थे. वो कैसे करते? रिपीट करें क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. यहाँ आपने फाउंड किया कि what is the impulse which is being imparted by the hammer on pile or pile on hammer, which comes out to be 682.8 Newton second. However, if I give you that the interaction time of this hammer and pile is 0.5 millisecond, then can you determine that impulsive force? Yes sir, impulsive force सर impulse तो force into time इक्वल है, तो to time पे डिवाइड कर लेंगे. So we will divide this impulse by 0.5 millisecond in order to determine the impulsive force in terms of Newton. Is this point clear to all of you? Yes sir. इसमें सर एक क्वेश्चन था, ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लॉजिकली अगर हम हैमर को पाइल पे स्ट्राइक करेंगे तो वेलोसिटी फिर फाइनल जीरो होनी चाहिए ना? नहीं, क्यों जीरो होनी चाहिए? फाइनल मतलब टिपिंग तो हो जाएगी, लेकिन फाइनल एट द एंड तो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं क्योंकि वो सैंड में पड़ा हुआ है. ठीक है, हम देखें अभी हमने बात की, हमने जो पोजीशंस डिफाइन की है ना, हमने पोजीशन 1 डिफाइन की है फ्रॉम वेयर दिस हैमर इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, उसको हमने पोजीशन 1 के तौर पे डिफाइन की है. पोजीशन 2 इज द पोजीशन जस्ट बिफोर द हैमर स्ट्राइक्स द पाइल एंड पोजीशन 3 इज द पोजीशन जस्ट आफ्टर हैमर स्ट्राइक्स द पाइल. सो इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है उसके बाद जो पोजीशन है वो हमने पोजीशन 3 डिफाइन की है. हाँ, अगर हम आपके पोजीशन 4 डिफाइन करें, वो पोजीशन जिसपे जाके ये हैमर और पाइल जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, उसके लिए फिर हमें सैंड का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो तमाम चीजें जो है वो चाहिए होंगी. तो हम पोजीशन 3 डिफाइन करें, इट इज द पोजीशन जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ दिस हैमर विद दिस पाइल. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच. तो अगर हम पोजीशन 4 की बात करें कि कितना अंदर तक सैंड में ये जाएगी, फिर वो पोजीशन 4 में डेफिनेटली मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन फिर उसके लिए हमें सैंड का रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो पता होना चाहिए, उसकी मदद से फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं. Okay, sir. Okay, any other point which any of you would like to ask? Okay, so moving on to some exercise problems. अब देखिए इसमें जितने भी आपको अभी तक हमने जैसे दो एग्जांपल्स की, दोनों में क्लियर कट वर्डिंग्स जो हैं वो कहती थी कि once that interaction is being completed, the whole system is going to move with a common velocity. तो इस टॉपिक से रेलेवेंट आपको जितने भी प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे उसमें रिबाउंड वाला केस नहीं होगा. आपके पास दोनों पार्टिकल्स कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे. इसके मुकाबले में जो अगला टॉपिक है इंपैक्ट वाला, उसमें फिर हम उसको रिबाउंड को और बाकी उनकी वेलोसिटीज को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे. Okay, moving on to the next problem, which is the exercise problem 15-39, in which we have two particles. One is particle A, this car A, that is traveling with a speed VA at an angle of 45 degrees with respect to the x-axis. This car has a mass of 2 mg, that is 2000 kg. Then you have a second car, which is car B,
its mass is given to you as 1.5 mg या 1500 kg आपको इसका mass given है, and that car is traveling towards the negative x-axis with a velocity vb. Now the two cars collide together and the whole system moves with a common velocity of 50 kilometers per hour at an angle of 30 degrees with respect to the y-axis after collision. तो कोलाइड होने के बाद ये दोनों कार जो है वो रिबाउंड नहीं हुई बल्कि एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई और ये पूरा सिस्टम जो है इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस 30 डिग्रीज के ऊपर. यू नीड टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज वीए एंड वीबी. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है देख के? Yes, sir. Okay, so how we are going to determine these magnitudes VA and VB? Any idea? Yes, sir. Sir, दो unknowns हैं और दो. तारिक आपके एक सेकंड, तारिक आपके अलावा भी लोग अटेंड कर रहे हैं, बाकी सारे सो रहे हैं? जी, कोई और स्टूडेंट जो बता सके? There are almost 35-36 students in the class जो अभी शायद अटेंड कर रहे हैं. So क्या कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा? रिपीट करते मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अननोन्स जो हैं दे आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वी एंड वीबी, दैट इज द वेलोसिटीज ऑफ कार ए एंड बी जस्ट बिफोर कोलिजन. ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, ये अननोन है यहाँ. सो हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दोस टू अननोन्स? Is there any external impulsive force acting on the system along the x-axis just before or just after collision during that interaction? बिफोर कोलिजन तो कॉमन स्पीड से हैं तो नहीं सर होगा. हमारे पास दोनों के मैसेज हैं, दोनों की जो आपकी वाली वेलोसिटी है वो है, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. दूसरा, आफ्टर कोलिजन जो वाई एक्सिस वाली साइड पे जिनकी ट्रांसलेशन हो रही है वो सारी की सारी वी ए की वजह से हो रही है. ठीक है. तो उस रिलेशन से हमारे पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा वी ए का. बेसिकली आपने ये जो पूरी कहानी बताई है अब्दुल्ला, आप चाह रहे हैं कि सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम along x or y axis, so the system's momentum has been conserved along the x as well as y axis. So we can apply the conservation of momentum principle on this system along the x as well as y axis. So 50 kilometers per hour अगर आप इसको convert करना चाहते हैं तो you can convert it. अगर आप convert नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That is 13.89 meters per second. मैंने यहाँ convert किया हुआ है, so it is 13.89 meters per second. So applying the conservation of momentum principle first of all on the system along x-axis, that says that the mass of car A, which is 2000 kg, what is the momentum of car A along x-axis before collision? VA cos 45 into VA. So 2000 into VA cos 45 is the momentum of car A along the x-axis. What is the momentum of car B along x-axis? VB into 1500. So 1500 is the mass, and since B was traveling towards the negative side of x-axis, so it should have a negative momentum. So that's why we have included a negative sign here, and that should be equal to 3500, which is the mass of A and B combined together. 3500 into क्या आएगा इसके साथ velocity? 13.89. 13.89. जी, कोई cos sign भी आएगा? Yes sir, 13.89 sin 30. So 3500 into 13.89 sine 30. So this is going to be my equation number 1. Similarly, there is no external impulsive force acting on the system along the y-axis. It means that the system's momentum has been conserved along the y-axis as well. So 2000 into VA sine of 45 plus initial momentum car B का क्या है y-axis के along? 0. Since car B was traveling along the x-axis, so its momentum along y-axis would be equal to 0, and that should be equal to 3500 into 13.89 cos of 30. So this would be my equation number 2. So I have two equations, two unknowns. Once these two equations are being solved,
the value of VA comes out to be 29.8 meters per second, and the value of VB comes out to be 11.9 meters per second. So these are the velocities of these cars just before striking each other. Is this point clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, कोई क्यूरी हो किसी की तो काइंडली आप पूछ सकते हैं. No, sir. Okay, so moving on to the final problem of this topic. बड़ा interesting problem है, थोड़ा सा और से इसको एक नजर देखें, उसके बाद फिर we are going to discuss this problem. Problem 15-53. Okay, in this problem we have a 20-pound cart, which is cart B, and this cart is at rest. It is being supported on rollers of negligible size. What are you doing here is you have a 10-pound suitcase which is being thrown horizontally onto this cart at a speed of 10 feet per second. So आपके पास जो cart B है वो रेस्ट पे है. आप एक अदद सूटकेस जो कि 10 पाउंड्स वेट का है, इसको इस कार्ट के ऊपर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 10 फीट पर सेकेंड. What you need to do is you need to determine the length of time that A slides relative to B, as well as the final velocity with which the system moves after the relative velocity of A with respect to B has become equal to 0. यानी आपने थोड़ा सा इसका the coefficient of friction between A and B is given to you as 0.4. आप थोड़ा सा इसका मोशन मुझे बता सकते हैं किस तरह का मोशन इस प्रॉब्लम में हो रहा है जब आप सूटकेस को कार्ट के ऊपर फेंकेंगे? रिलेटिव मोशन. मसलन इस थोड़ा सा मोशन को मुझे डिफाइन करें ना. आपने सूटकेस कार्ट के ऊपर फेंका, कार्ट रेस्ट पे था, आपने सूटकेस को 10 फुट पर सेकंड के साथ इस कार्ट के ऊपर फेंका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ. किस तरह का मोशन होगा इन दोनों चीजों का? सर कार्ट एक्सिस के लोग सर पहले बी पॉइंट ऊपर भी और मूव दोनों करेगा, same velocity फिर हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा. नहीं, आप ये अज्यूम करें कि रोलर्स लगे हुए हैं तो कार्ट जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, वो वर्टिकल मोशन नहीं करेगा. ठीक है, Yes, अब sir. बताएं. सर इनिशियली कॉर्ड रेस्ट पर होगा और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के दरमियान 10 फीट पर सेकंड होगी. अच्छा, फिर क्या होगा? सर फिर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे. अच्छा, जैसे आपने सूटकेस फेंका कार्ट के ऊपर, कार्ट थोड़ा सा इस सूटकेस थोड़ा सा इस कार्ट पे स्लाइड नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा. और फिर स्लाइड जब खत्म हो जाएगा तो फिर जब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये कार्ट और सूटकेस सेम वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करेंगे. यस सर. यस सर. सो हम क्या कह रहे हैं कि वी आर कंसीडरिंग द इंटरेक्शन ऑफ दिस सूटकेस एंड द कार्ट. Just before interaction, the cart was at rest and the suitcase was traveling at a speed of 10 feet per second. After that interaction, both the suitcase and cart would be traveling with a common velocity towards the right. यानी अगर मैं relative velocity देखूं interaction के बाद तो the relative velocity of A with respect to B would be equal to 0. Rather, this whole system would be traveling with a common velocity. ऐसा ही है? यस सर. Okay, so how we are going to find out that final velocity जिसके साथ ये पूरा system interaction के बाद move कर रहा होगा, and the time जो कि सूटकेस स्लाइड करेगा फेंकने के बाद से लेके जब तक उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है वहां तक. सर पहले सबसे पहले टाइम मालूम करेंगे वो किसी एक बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के. ओके, चलें एज पर तारिक हम पार्टिकल ए को कंसिडर करते हैं. ठीक है, और हम कहते हैं कि पार्टिकल ए के ऊपर उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बिटवीन दिस पॉइंट और जब तक उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 पे आती है. ठीक है, दैट फ्री बॉडी डायग्राम वुड लुक लाइक कि आपके पास वेट ऑफ ए जो है इट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. The reaction of this cart, which is represented here as NB, so that reaction of the cart is going to act upward. ऐसा ही है? सर फ्रिक्शन फोर्स. Friction force, okay. In what direction that friction force is going to act? Towards the left. Towards the left. So this is the friction force which would be acting here. What is the magnitude of this friction force? Mu n. Mu n was 0.4 NB. And what is the value of NB? WA.
because once you apply summation Fy equal to 0, this Nb would be equal to WSO. In other words, the friction force is going to be 0.4 WA. Okay, now the free body diagram is complete. जी तारिक, क्या अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके ऊपर? सर मोमेंटम वाला जो इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, So we are applying वो कांस्टेंट है. We are applying the principle of impulse and momentum on particle A along the x-axis. That principle says that the initial momentum of particle A, which is ma va1, plus sum of all the impulses that are acting on particle A, that is f dt, should be equal to ma va2. ठीक है, यही कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम. जी सर. अच्छा, चलें, इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल ए का क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. मास, जो कि 10 को आप 32.2 पे डिवाइड कर देंगे. वेलोसिटी क्या है? 10 फीट पर सेकंड. 10 फीट पर सेकंड. इस पे जो इंपल्स आएगा वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पॉजिटिव इंपल्स होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव इंपल्स. सो माइनस म्यू WA या NB जो भी लिखना चाहें, मल्टीप्लाई बाय इंपल्स होता क्या है? इंटरेक्शन टाइम फोर्स. ठीक है, T आ गया. So mu WA into T is the impulse due to force of friction with a negative sign. Okay, what should be ma va2? Mass इसका उसी तरह आ जाएगा, which is 10 over 32.2. What about va2? Do you know the value of va2? सर हम रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे थे, ये जीरो होगी कि नहीं? va2 तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है. आप रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, बिकॉज द होल सिस्टम वुड बी मूविंग विद सम वेलोसिटी. बिल्कुल. तो इट मींस के दो अननोन आ गए, टाइम भी अननोन है, va2 भी अननोन है. व्हाट शुड वी डू नाउ? मूव टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Okay, so now we are going to consider the system rather than the individual particle A and B. So once we are talking about the system, we are talking about the combined effect of suitcase as well as cart. So is there any external impulsive force acting on the system along the x-axis? What about friction? Is it external force or internal force if we are considering a system? इंटरनल फोर्स है, दोनों के बीच में लाएगा. So once we are considering that system, then friction force would become internal to the system. It means that there is no external impulsive force acting on the system. Therefore, the system's momentum has been conserved along the x-axis. So applying the conservation of momentum principle along the system, which says that MAVA1, so MAVA1 plus MBVB1 should be equal to MA plus MBV2. So this is the conservation of momentum principle which is being applied on the system. So once we are considering the system, the friction force would become internal to the system. Therefore, the system momentum is going to be conserved along the x-axis. So applying that conservation of momentum principle, what was the cart's momentum before interaction? Zero. Since the cart was at rest, so it would have zero momentum. This ma va1 would be equal to ma into 10. So ये आपको चीज known है. This right side is कितना हो जाएगा? 10 plus 20, 30 divided by 32.2 is going to be the mass of the system into V2. So once you solve it, the value of V2 with which the whole system is going to move with a common velocity is 3.33 feet per second. So this is the velocity with which the system is going to move once this cart, once this suitcase has come to rest with respect to the cart. So इतनी velocity के साथ ये पूरे के पूरा system move करेगा. So putting the value of this VA2 in this equation here will give you the value of time which comes out to be 0.518 seconds. So ये वो time है जो इस सूटकेस को लगेगा जब तक वो स्लाइड होगा relative to the cart, और 0.5 seconds के बाद relative motion खत्म हो जाएगा और ये सूटकेस और कार्ट दोनों जो है वो combined velocity of 3.33 feet per second के साथ जो है वो travel करेंगी. Is this point clear to all of you? कोई चीज जो आपको ना समझ आए? With this we are going to stop here because हमने ये टॉपिक खत्म कर लिए.
अभी अगर हम इम्पैक्ट शुरू भी करते हैं तो प्रोबेबली शायद हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन देख सकें, उसकी बाकी चीज़ें हम नहीं देख सकेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। इंशाल्लाह इम्पैक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हम स्टार्ट करेंगे कल, अपनी जो 2 घंटे वाली क्लास है उसके अंदर।